बात का कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या ग्रीस के एक छोटे से गांव के अंदर ओलिव के पेड़ के नीचे झोपड़ी है आपकी वहां रहते हो, या फिर आप आनंद लोग दिल्ली के अंदर 100 नंबर के बंगले में सेकंड फ्लोर पे एक टेरेस गार्डन भी वहां रहते हो। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप राजपूत हो या आप SC/ST की कैटेगरी के हो या किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, या छोटे कस्बे के रहने वाले हो या बहुत बड़े शहर के। फर्क इस बात का पड़ता कि आपके अंदर क्या वो डिजायर है, क्या वो पैशन है, क्या वो बर्निंग डिजायर है। ये जिस सक्सेस को पाने के लिए आप सारे बाधाओं को तोड़कर केवल अपने लक्ष्य की तरफ देखोगे और वहां तक बढ़ने तक रोकोगे नहीं। मैं तो ये करता हूं। Mr. Chandrashekhar ji has, that he can create literal charisma among us 240 students sitting in the single auditorium, that they all will start dancing in his tunes. That is something surprising. So I must congratulate Mr. Chandrashekhar ji for this wonderful initiative which he is taking in his life to rejuvenate, to create an enthusiasm among us, the youth of the country, and the contributions which he is making are, I am sure, unparalleled, because he is not only creating a sense of confidence among us, the young people, despite the odds which the students are facing, despite lots of challenges which they might be having in their lives. He is creating a spark of confidence and optimism among us them. He is creating that sense of hope that yes, you are worth it, you can create a difference in your life. You have to untap the potential which is hidden among us to yourself. So I must congratulate once again Mr. Chandrashekhar ji and thank with full heart and gratitude